Hi kids, welcome to today's session. This is Himanshi Singh, your biology faculty. On Biology with Himanshi, I will be teaching you guys zoology and botany and I'm going to ace your NEET preparation. For this, we are going to start with the very first lecture on this channel and the chapter that we are going to discuss today is your transport in plants. So in today's lecture, we are going to discuss about your introduction to transport in plants and we are going to talk about the means of transport, that is diffusion. Now let's move forward. A lot of you already know me and some of you might be new to my channel. So this is my introduction. I'm Himanshi Singh, your biology faculty, having 4+ years of teaching experience, guided and mentored more than 10,000 plus students for their NEET examination. Best NEET biology score produced by one of my students is 340 out of 360. And along with this, I am CSIR NET qualified. So this is all about me. And now, talking about this particular chapter, let's discuss about the exam analysis, how important the chapter is. Now, talking about the chapter, on an average, we see at least 2 to 1 question coming from this chapter. It might sound like it's 2 to 3 questions and it's not very important, but the chapter is quite important and interesting. And it is going to become easy peasy lemon squeezy with me. So let's move forward and let's get started. So the things that we are going to talk about is introduction to transport in plants and the means of transport. If we talk about us, yes, in our body there is presence of a circulatory system. पूरा का पूरा circulatory system present है, heart present है और ये heart हमारे पास blood को pump करने में help करता है, right? The circulatory system helps in distributing different components throughout our body. But when we talk about plants, there is no circulatory system. They do not have a proper circulatory system. They do not have heart, etc. So how the transportation takes place inside a plant? Plant की body में कैसे transportation हो रहा है जब वहाँ पे कोई heart नहीं है, कोई भी circulatory system present नहीं. So this is what we are going to discuss. There are two important tissue present in the plant's body that helps in the transportation, that is phloem and xylem. फ्लोएम और जाइलम हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर. नाउ प्लांट को क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट प्लांट नीड्स टू ट्रांसपोर्ट. यस, फर्स्ट थिंग इज वाटर. Water is very important. Along with this, mineral nutrients are important. Yes, mineral nutrients are important. Organic nutrients such as sugar and plant growth regulator, which helps in regulating the different physiological aspects of a plant. तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. बट वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है? हमें पता है कि प्लांट बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक यूकेलिप्टस, द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, है ना. सो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू द वेरी टॉप. बिल्कुल ऊपर तक पानी कैसे जाएगा, कैसे ये सारी चीजें बिल्कुल टिप तक जाएंगी. तो इसके लिए हमारे पास ये पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, सो उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि आपके एनाटॉमी ऑफ प्लांट क्लियर नहीं है, राइट. तो आपको एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर. In this particular session and all the upcoming sessions that I am going to take, I'll try my best to explain the anatomy before we discuss this particular topic of transport in plants so that it is clear and in a connect to the kids. चलो आगे बढ़ते हैं. So there are a short distance transport and there can be a long distance transport inside a plant. Long distance जैसे हमारे पास root से tip तक कोई भी चीज move करेगी, right? If something is moving from the roots to the tip of the plant, we call it as long distance transport. Whereas there can be, small short distance transport as well. Now short distance transport can be like ting tong, आपके पास चीनी मिलेगी क्या, right? This kind of movement is known as your short distance transport. What I mean to say is that a cell can transport things from one cell to another cell. It can import something from the neighboring cell or it can give something to the neighboring cell. This is what your short distance or the small distance transport is. For the substance to move in a small distance, there is something known as diffusion. Yes, diffusion and cytoplasmic streaming helps in this particular process. Along with this, there is presence of active transport. So let's understand about all these particular things. What is diffusion, what is cytoplasmic streaming and active transport. First thing that we are going to talk about is your cytoplasmic streaming.
So talking about the cytoplasmic streaming, you can see this particular image. In this, you can see that the molecules over here are moving, right? They are moving. This kind of movement where the things are going to move inside the cell from one point to another. Mhm. Just a second, let me change the color. Yes. When the things are moving from one point to another, like this, inside the cell, we call it as cytoplasmic streaming. Simple. Yes. तो ये हमारे पास cytoplasmic stream हो गया, यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ से यहाँ. तो सेल के अंदर ही अंदर जब सब्सटेंस मूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन हम लोग आज के सेशन में सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो विल डिस्कस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन योर नेक्स्ट सेशन. Now, transport over longer distance. Yes, transport over longer distance. For example, like water and minerals are moving to the very top of the plant. Yes. How is this kind of movement going to take place? So for this, there is presence of vascular system. You guys already know about xylem and phloem. So xylem and phloem are going to help in the long distance transport, and the process is known as translocation. Trans means shift, location means location. So when there is change or shift in the location of a substance, which means a substantial transport or movement is taking, a shift is taking place, we call it as translocation. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. So in rooted plants, transport in xylem. Xylem is going to transport your water and minerals mainly along with certain nutrients, certain organic nitrogen. Yes, they're going to transport your organic nitrogen as well. Something is wrong. Organic nitrogen along with your few minerals, water, and certain plant growth regulators. These things are going to move inside your xylem. But the movement is essentially unidirectional, which means that the things are going to move in only one direction. Uni means one, and direction means direction. So the things are going to move in only one direction, that is from the roots to the higher part of the plant, right? From the roots to the stem. Whereas the organic nutrients, etc., are transported with the help of your phloem. Phloem is going to help in the transport of your organic nutrients, and this kind of transportation can be multidirectional. As you can see over here, food made by the leaf is flowing in the upper direction as well as the lower direction. तो खाना जो हमारे पास लीफ बना रही है वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. तो फ्लोएम आपके पास मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कराता है और जाइलम आपके पास क्या कराता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. ठीक है. Yes. The roots of the plant absorb water, minerals from the soil, which has been distributed all over the plant's body. ये तो हमें बचपन से पता है, right? This is something that we know since our childhood, that roots are going to absorb the water and this water is going to move higher into the leaf, right? Now the food prepared by the leaf, by the process of the photosynthesis, is going to be transported all over the plant, and this is known as multi-directional movement. And this multi-directional movement is going to take place with the help of, yes kids, phloem. Phloem is going to help in this transportation. Minerals taken up by the roots are transported upwards into the stems and the leaf and the growing region, and this transportation is going to take place with the help of xylem. Xylem is going to help, and this transport is unidirectional. So wherever we have GIF, there is some error in writing, isn't it? चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है, समझ में तो आ रहा है हमें, है ना? So xylem हमारे पास क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कराएगा. अब हमारे पास आ गया एक्चुअल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो देयर आर 4 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें से हम पहला वाला डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफ्यूजन. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस प्लांट में कवर होगा, मूवमेंट होगी, उसके ऊपर हमारे पास 3 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पहला आ गया डिफ्यूजन, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. We'll talk about it in the next class. Active transport will also be covered in your next session.
Translocation, transmean shift, and location, where there is a long distance transport. So for the short distance transport, there is presence of three different means: diffusion, facilitated diffusion, and active transport. Whereas in case of translocation, there is presence of long distance transportation. So we are going to talk about diffusion. Now let's discuss and understand diffusion in simple language. हम लोग जब भी कहीं से बाहर बाहर से आते हैं तो हमें घर के अंदर कुछ फ्रेगनेंस फील होती है. इट माइट बी अ बर्निंग कैंडल, राइट, और देयर माइट बी प्रेजेंस ऑफ अ परफ्यूम. या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी खाने में कुछ बना रही है तो हमें खुशबू से पता चल जाएगा कि अरे आज तो मम्मी ने छोले बनाए हैं या आज तो मम्मी ने राजमा चावल बनाए. होता है हम सबके साथ. यस, we can easily understand, we can easily, with the help of the fragrance that we get, we can understand what actually happening inside. Like someone is using a very nice perfume. So this kind of thing is going to happen because of diffusion. Diffusion is basically what? Because there is presence of certain energy inside the molecules, which is known as kinetic energy. Yes, due to kinetic energy of molecules, these molecules are going to move from one point to another. The molecules are going to move from one place to another. This kind of movement due to kinetic energy is known as diffusion. तो diffusion क्या है बच्चों? हमारे पास molecules move करेंगे एक जगह से दूसरी जगह. किसकी वजह से? kinetic energy की वजह से. तो इसको हम क्या बोलेंगे? diffusion. So diffusion occurs from one part of the cell to the other, from a cell to cell, over short distance, such as from an intercellular space of the leaf to the outside. And this movement by the diffusion is passive. तो ये क्या कहना चाहते हैं? These are NCERT statements, right? तो NCERT ये बोल रही है कि जो डिफ्यूजन प्लांट की बॉडी के अंदर होता है वो सेल के अंदर किसी चीज को मूव करने में हेल्प करेगा. तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है ये कुछ नहीं है, ये क्या है? डिफ्यूजन. अनदर थिंग, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने में हेल्प करेगा. ठीक है, दिस इज सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी सेल्स से थ्रू मूव करते हुए हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाए. या हमारे पास इंटरसेल्यूलर स्पेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज सर्टेन इंटरसेल्यूलर स्पेस. इस इंटरसेल्यूलर स्पेस से चीज सेल के बाहर आ रही है, या फिर तो ऐसा करें कि प्लांट की बॉडी के ही बाहर जा रहा है. सो दिस इज अनदर मीन्स ऑफ डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन हेल्प्स इन सेल टू सेल movement, short distance movement, and within the cell transportation, right? Now there is a word known as passive. अब passive का मतलब क्या होता है बच्चों? passive की अगर हम बात करें, so passive is something which means on its own. कोई भी चीज जो अपने आप हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? passive. Which means it doesn't require any energy. इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए. No external energy is required. Yes, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए. दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई बच्चे? इसका एक अपोजिट वर्ड होता है. इसका अपोजिट वर्ड क्या है? व्हाट इज द अपोजिट फॉर पैसिव? इट इज एक्टिव. सो वी हैव समथिंग नोन एज एक्टिव. एक्टिव मीन्स इट इज allowed to take place if external energy is provided. मैम की हैंडराइटिंग बहुत खराब है पर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा. यस, सो एक्टिव में क्या होगा? हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो रहा है बट इट इज गोइंग टू हैपन ओनली इफ द एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड. इसको करने के लिए बाहर से एनर्जी हमें देनी पड़ेगी. So diffusion is something that is going to happen on its own. और क्यों हो रहा है अपने आप? Why is it passive? Because it is happening because of kinetic energy of molecules. Molecules के पास अपनी खुद की एनर्जी है. Yes, molecules have their own energy. This is why diffusion is passive. चलिए. So in diffusion, molecules move randomly. Yes, things can move in any direction. This is a molecule having kinetic energy. It can move up, down, right, left, diagonal, in any direction, right? So the movement of molecules is random, but on an average, or the end of the discussion, once the diffusion is going to come to an end, what is going to happen?
the movement, the net result is that the molecules are going to move from their higher concentration to their lower concentration. Higher concentration से कहाँ पे move कर रहे हैं बच्चों? Lower concentration पे move कर रहे हैं. So there are more, let's say, water molecules. Yes, there are more water molecules and there are less water molecules. So more water molecules means that there is more energy. More water molecules, or let's say more molecules means more energy. Yes, more energy means more diffusion. Easy peasy. Yes. So अगर हमारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा डिफ्यूजन होगी. ज्यादा डिफ्यूजन होगा मतलब यहाँ से मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, राइट? मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. So the molecules move from the region of higher concentration to the region of lower concentration, and there is no expenditure of energy. This is why the process is known as passive. It's a passive process. So what are the things to remember? First thing, there is random movement. Second, the net result is molecules move from higher concentration to lower concentration. And lastly, there is no use of energy, no expenditure of external energy. In cell, the external energy means that there is no use of ATP. Yes, there is no use of ATP molecules. यहाँ पे कोई ATP molecules use नहीं होंगे. Now, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है ना, मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई उनसे कुछ कह नहीं रहा है, तो प्रोसेस कैसा स्लो चल रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना. हम धीरे धीरे अपने काम में लगे हुए हैं, बट इट इज गुड. इट इज रियली गुड, राइट? क्योंकि डिफ्यूजन अपने आप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट इट क्रिएट्स अ डिफरेंस, इजंट इट? तो धीरे धीरे लगे रहो, बट लगे रहो, काम करते रहो. So diffusion is a slow process. It is going to happen on its own. It's a slow process and it is not dependent on living system. जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था, we have discussed the first example, that is fragrance. Fragrance is going to move from an area of higher concentration to lower concentration, right? And movement of fragrance is not dependent on a living system. So diffusion is something that can happen anywhere in any molecules, like solid, liquid, gases. Anyone can show this kind of movement. So it's a slow process. Now, diffusion is obvious in gases and liquids. Why is it obvious in gases and liquid? Because they have more kinetic energy. Yes, the molecules are free to move here and there, right? So molecules are free to move. But diffusion is in solid is diffusion is more likely in the solid in comparison to the diffusion of solids. Now, what does this statement from your NCERT means? Let's read this statement once. Let me highlight. In solids, diffusion is more likely as compared to the diffusion of solids. Now, let's take a very simple example to understand this particular thing. Let's say there is presence of a pen, a paper. Let's say there is presence of a paper. So we have a paper, or let's say there is presence of a hanky. What is going to happen if I want this paper or a hanky to move anywhere? Is it going to diffuse? Will there be any movement? Is a paper going to diffuse? The answer is no. But if I'm going to have a drop of water on this hanky or on a paper, we know that the water molecules will spread in the paper. We know that the water molecules will be absorbed by the handkerchief. Yes or no? So the hanky is going to absorb the water. The paper is going to absorb the water. पेपर पानी को absorb कर लेगा. ये हमारे पास पेपर है, पेपर के अंदर हमारा पानी का मॉलिक्यूल आएगा एंड दिस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अरे काम क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ. सो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर डिफ्यूज हो जाए. सो दिस इज डिफ्यूजन इन द सॉलिड. सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन आसानी से हो रहा है, सॉलिड का डिफ्यूजन इतनी आसानी से नहीं होता. Right? I hope it is clear. अगर कोई डाउट रहता है then please drop it in the comment section. I will revert back to each one of you. And for engagement, I know बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मैम तो रिकॉर्डेड क्लासेस ले रही है, लाइव सेशन नहीं ले रही. सो उसके लिए हम लोग आपके लाइव सेशंस भी रखा करेंगे जस्ट फॉर द डिस्कशन ऑफ योर डाउट्स. ठीक है, चलो
अब डिफ्यूजन प्लांट की बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. डिफ्यूजन प्लांट की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द ओनली मीन्स फॉर द गैसियस मूवमेंट. मतलब प्लांट की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, प्लांट की बॉडी से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है दिस इज डिफ्यूजन. तो जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट की बॉडी में वो सब किससे हो रहा है? डिफ्यूजन से हो रहा है. हेंस डिफ्यूजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट. राइट, प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन होना. व्हाई? बिकॉज इट इज द ओनली मीन्स फॉर योर गैसियस मूवमेंट. Now, diffusion is a spontaneous process. Spontaneous means happening on its own. Spontaneous. On its own. Yes, this is a process that is going to happen on its own. Right? And it occurs down a concentration gradient. Now, what does the word down the concentration gradient mean? So, we know that the diffusion is going to take place from higher concentration to lower concentration, है ना? हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पे जाएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगा. ये जो मूवमेंट हमारे पास हो रही है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज down the concentration gradient. Down the concentration gradient. इसके अलावा एक और वर्ड बोलते हैं also known as downhill movement. अब ये याद रखना, देख मैम के हाथों की तरफ देखना, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं. चलो, अब हमारे पास ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इस हायर कॉन्सेंट्रेशन से हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या कर रहे हैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहे हैं, तो हम नीचे ही तो आ रहे हैं ना. हेंस वी कॉल इट एज डाउनहिल मूवमेंट. क्या बुलाया हमने इसको? डाउनहिल मूवमेंट. ठीक है. अब क्योंकि हम लोग यहाँ हिल पे थे, ये हमारे पास हिल है, यहाँ से मेरा बच्चा नीचे आ गया. ठीक है, ये रहे हमारे बच्चे, हैंडसम बच्चे हमारे, हैंडसम एंड स्मार्ट, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, प्रिटी. ठीक है, तो ये हमारे बच्चे नीचे आ. तो जब हमें हिल से नीचे आना होता है, डज इट रिक्वायर्स एनी एनर्जी? है ना, कोई एनर्जी लगती है जब हम नीचे आते हैं हिल से? नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस. कैसा है बेटा? पैसिव है. नो एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है. सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगे, जिसको हम डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और इसको हम और क्या बोलते हैं? डाउन हिल मूवमेंट. तो ये कैसा होगा? पैसिव प्रोसेस होगा, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी. ठीक है जी. चलो, अब डिफ्यूजन प्लांट्स के अंदर जो होता है ये अपने आप होता है, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब कितना डिफ्यूजन होगा, कितनी स्पीड में होगा, तेज होगा, बहुत धीरे होगा, किस तरीके से चलेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं. सबसे पहली चीज, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. बेटा जितनी ऊंची हिल होगी उतनी ही जल्दी हम नीचे आ जाएंगे. यस और नो? यस और नो? तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पे हम होंगे उतनी जल्दी हम नीचे आ जाएंगे. दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब एक जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब एकदम क्राउडेड है, सांस लेने की जगह नहीं है, दूसरा रूम एकदम खाली है, तो सब लोग फटाफट फटाफट भाग जाएंगे. जैसे कोई ट्रेन आती है ना, ट्रेन आती है, मेट्रो आती है, तो स्टेशन पे तो सब लोग एकदम भरे हुए हैं, भीड़ भरी हुई है, और जैसे ही खाली मेट्रो आती है सब उसके अंदर भाग जाते हैं. राइट, तो ये हो गया हमारे पास strength of concentration gradient. Right, so molecules are going to move from their higher concentration to their lower concentration. ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगी, क्योंकि पुश लगेगा ना पीछे से धक्का दे रहे, तुरंत जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे. द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव फास्टर. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. more temperature means more kinetic energy. अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो डिफ्यूजन कैसा होगा? जल्दी होगा या कम होगा? यस, diffusion will be faster or slower? Of course it is faster. So more temperature means more kinetic energy. More kinetic energy means faster diffusion. Next one is size of the diffusing substances. So if there is presence of a smaller molecule, certainly it will move faster. Small molecule moves faster in comparison to the larger molecule.
तो लार्जर मॉलिक्यूल हमारे पास कैसे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, राइट। उसके अलावा बच्चे फिर हमारे पास अगला आ जाता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस एंड परमेबिलिटी ऑफ द सेपरेटिंग मेम्ब्रेन, इन दो चीजों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द साइज, ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है। ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो जल्दी डिफ्यूज करेंगे और बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो धीरे धीरे डिफ्यूज करेंगे, राइट। सो डिफ्यूजन ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज फास्टर। Diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility। जैसा मैंने बोला कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, yes we are talking about this plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किसकी बनी होती है, क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स, किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है हमारे पास लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये लिपिड्स कैसे होते हैं बच्चा हमारे पास, हाइड्रो, ओहो एक मिनट, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स या हम इनको बोल सकते हैं कि दे आर वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल्स, या हम इनको बोल सकते हैं कि हमारे पास होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और आम भाषा में अगर हम बोलें इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन कॉल देम एज फैट डिसॉल्विंग मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास ऑयल होता है उसी तरीके से हमारे पास लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स क्या करेंगे, ऑयल की तरह जो वाटर को रिपेल करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करते हैं, राइट। तो वाटर को रिपेल करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो लिपिड्स हैं जो हमारे पास मेजर कंपोनेंट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये लिपिड्स हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स को, पोलर मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देते, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि भाई हमारे पास दोस्त है ना, तो हम अपने दोस्त का काम जल्दी करा देंगे और जो हमें पसंद है हम उसका काम थोड़ी ना जल्दी कराएंगे। तो जो लिपिड का दोस्त होता है, जो लिपिड के जैसा है, जैसा मतलब हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया या फैट मॉलिक्यूल हो गया, ये तो बहुत आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। बट द मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉन फ्रेंडली विद लिपिड्स, जो लिपिड्स के दोस्त नहीं है, उनको बहुत मुश्किल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने में, ठीक है। So substances soluble in the lipids diffuse faster through the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिपिड soluble molecules जल्दी मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड, है ना। हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है। ये लिपिड कैसे है बेटा, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग है, या हम बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स रिपेलिंग है, पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनका जो इंटीरियर पोर्शन है, देखो दो तरीके की चीजें प्रेजेंट होती है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स में। दिस इज फॉस्फोरस, जिसको हम फॉस्फोरस हेड बोलते हैं, जो है पोलर हेड। ये तो बेटा वाटर लविंग होता है, मतलब इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है पानी से। बट जो टेल्स है वो टेल्स कैसी है, नॉन पोलर है, विच मीन्स वाटर रिपेलिंग। ये क्या करती है, वाटर को रिपेल करती है। तो हमारे पास ऊपर का पोर्शन तो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है ना। और जो बीच में हमारे पास सेंटर बन रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेल्स प्रेजेंट है, ये आप देख लो सिर्फ टेल्स प्रेजेंट है, ये हो गया हाइड्रोफोबिक विच मीन्स वाटर रिपेलिंग। तो ये क्या करेंगे, पानी को रिपेल करेंगे। अब ऐसे में हमारे पास हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे मूव करेगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल आया, ठीक है, यहाँ तक तो ये आ गया, यहाँ पे भी इसकी बातचीत चल रही है, बढ़िया है ना। फॉस्फोलिपिड से जो फॉस्फोरस हेड है उससे तो मस्त बातचीत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही वो अंदर आने लगेगा तो यहाँ पे इसको रिपेल कर दिया जाएगा, तो वो अंदर आने की कोशिश करेगा, उसको वापस भेज देंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे एंटर करेगा सेल के अंदर, हमें पता है सेल में तो वाटर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। So how the water molecule is going to enter inside our cell? This is the question. Not only water molecule, but polar molecules like ions, right? Polar molecules like proteins, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी सेल के अंदर कैसे एंटर करेंगे। मिनरल्स कैसे एंटर करेंगे हमारी सेल के अंदर।
So this is one of the question कि ये काम कैसे चलने वाला है, how is this going to happen? So इसके लिए बेटा हमारे पास प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है? प्रोटीन्स, यस। तो हमारी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है प्रोटीन। सो चार्ज पार्टिकल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस, पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये वाटर लविंग है। They cannot pass through the hydrophobic interior of the membrane by diffusion. तो simple diffusion से नहीं जा सकते। Yes, they cannot move by the simple diffusion. So how are they going to move? So what is the mechanism by which the polar molecules enter the cell? The process is known as facilitated diffusion. क्या बुलाते हैं इसको? Facilitated diffusion. और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बच्चे हमारे पास कौन हेल्प करता है? प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड्स प्लस प्रोटीन से, राइट। सो जो प्रोटीन्स हैं ये भी तो अपने दोस्तों को अंदर बुलाएंगे। हाँ, ऐसे थोड़े कि सिर्फ लिपिड्स के ही दोस्त सेल के अंदर आएंगे, प्रोटीन्स ने भी अपने दोस्तों को अंदर बुलाना है ना। सो दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो सब्सटेंसेस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी व्हिच मींस वाटर लविंग, या हम क्या बोल देंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनका प्रोसेस हमने क्या कर दिया? फैसिलिटेट कर दिया। फैसिलिटेट कर दिया मतलब इसको हेल्प कर दी, इनके मूवमेंट में क्या प्रोवाइड कर दी? हेल्प प्रोवाइड करा दी। और हेल्प कौन प्रोवाइड कराता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो हु इज गोइंग टू हेल्प? अरे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प करेंगे, ठीक है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड द साइट एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। तो जैसे आप देख सकते हो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन से मूव कर रहे हैं, और ये क्या है बेटा? हमारे पास हाइड्रोफोबिक लिपिड मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हो गए। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हम इसको अभी भी डिफ्यूजन ही बोल रहे हैं। तो डिफ्यूजन है तो मतलब कैसा होगा? पैसिव होगा। और अब आप मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करने वाले? हाउ द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव? अपहिल, डाउनहिल, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कैसे मूव करेंगे? यस, डाउनहिल मूवमेंट। तो डाउनहिल मूवमेंट होगा विच मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो अब ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन टू दिस वन, दिस इज एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है? इट कैन नॉट cause the net transport of molecule from low to higher concentration. अब बच्चों को ये याद रह जाता है, all that you are going to remember is low to high concentration, but you are forgetting a very important and essential word, that is cannot. Okay, so the molecules cannot, right? So facilitated diffusion is going to move molecules from higher concentration to lower concentration. Molecules कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हायर से लो मूव करेंगे, जिसको हम और क्या बोलते हैं? डाउन हिल मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले से होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम क्रिएट कर देंगे वो, नहीं, हमारे पास पहले से डिफरेंस होनी चाहिए कि भाई किसी एक जगह पे हमारे पास हायर मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी जगह पे हमारे पास लोअर मॉलिक्यूल्स, जैसे डिफ्यूजन में हो रहा था कि एक जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, दूसरी जगह पे कम है। वन साइड शुड हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन, अनदर साइड शुड हैव लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इन दिस केस द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर जस्ट गोइंग टू फैसिलिटेट द प्रोसेस. They are going to help in the process. They are going to help in the movement of the molecule from higher concentration to lower concentration. Okay. With this, we are done discussing about your diffusion. We will talk about your facilitated diffusion in lot of detail in the next class. Yes, so in the next class, we are going to discuss about your facilitated diffusion. Now, let's see how much you guys have understood. So, we are going to have a quiz session. So, let's move forward, and here comes your question.
So diffusion is very important in plant sense. Why diffusion is very important? Option 1, the cells have permeable cell wall. Option 2, it is the only means for the gaseous movement within the plant body. Plants cannot transport material by other methods such as active transport. And the fourth option, they are unable to move towards the source of nutrients. So quickly tell me the answer, kids, in the chat box. Okay. Three, two, one. And for this easy peasy lemon squeezy question, the correct answer is option 2. So it is very important because it is the only means for the gaseous movement. NCRT statement, right from your NCRT. Next one. The process of diffusion is involved in respiration, photosynthesis, transpiration, all of these. It's a very nice question. So let's see how many of you are going to give me the correct answer. Take your time. Okie dokie. So let's see what's the correct answer. And the correct answer is all of these. The students who have given the correct answer, kudos to you. Very good. See, respiration is about exchange of gases. Exchange of gases, right? So certainly the gases is going to involve your diffusion process. Photosynthesis also requires exchange of gases. Photosynthesis also requires the movement and entry of your oxygen. It requires water molecule, right? So everything is going to come with the help of diffusion. Even transpiration. Transpiration is loss of water molecules, right? Loss of water vapors. To be more correct, it is loss of water in the form of gaseous, right? So water vapors are going to come out, which means there is no involvement of diffusion. Simple. So all of the above is correct. Now the next question. Select the incorrect statement regarding facilitated diffusion. Though we haven't discussed facilitated diffusion in complete detail, you guys are eligible enough to give the answer. Read the question. Okie dokie. So let's see what's the correct answer. And the correct answer is it is faster than active process. No. The question is asking about the incorrect statement about facilitated diffusion. So it is a very specific process. Yes, it is because it involves protein. Involves proteins. We will talk about this in detail in next section, next class, right? Next one, it's a passive process. Yes, no energy is required. Next one, it helps the hydrophilic substance to be transported across a membrane. Yes, of course. Hydrophilic means polar molecules. Polar molecules, water molecules, etc. Right? The charged molecules. And is it a faster process? No, it is slower. Because चाहे ये कैसा भी हो है तो diffusion ही and diffusion is a slower process. Now with this, here comes your homework question. So for the homework, you have to give me the answer in the comment section, right? So please drop your answer in the comment section. Read the question carefully. Take your time. Fine, kids. With this, we are done with your lecture for today. Thank you so much. And I am hoping to see you guys soon in the next class. Don't forget to give the answer to the homework question in the comment section. Don't forget to hit the thumbs up button and share the video with your friends. Whosoever need this session, whosoever needs good preparation for the NEET in biology, right? Please share this channel. So thank you so much, kids. I will see you guys soon in the next class. Till then, always keep on smiling. See you guys soon. Bye bye.